Write the content. Does closing stock appears inside the trial balance? So the game starts like this. Does closing stock appears in the trial balance? So I'll be questioning something from you children. Any data in trial balance definitely comes from where? Excellent answer. It travels down from ledger. And children, any data in ledger definitely descends down from where? Very good. Journal. It comes from journal. Do tell me, have we ever passed any journal entry, children, till date, so called, for closing stock? No, sir. No, sir. Children, heard this much? So have we done any journal entry till date for closing stock, children? No. So there is nothing with respect to closing stock that appears in journal entry. जब उसका journal नहीं है, will there be any ledger posting? जब उसकी ledger posting नहीं बच्चों, will there be any balance of that account? There is no balance of that account, children. क्या आप ट्रायल बैलेंस में कुछ लिख सकते हैं? Not at all. So what would be the answer? No. Continue writing, children. Why no? Because there is no ledger account as closing stock account in the ledger book. Therefore, no question arises of its appearance in the trial balance. Heard well, children? So there is no ledger account as closing stock in the ledger book. Therefore, no question arises of its appearance in the trial balance. Quickly put. I repeat, children. If you get an item named as trial balance in the question, closing stock in the question of trial balance, और आप सोचेंगे डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, आंसर इज we'll put it nowhere. We'll put it nowhere. But children, there is a twist in the story. Please put it. It may appear in the trial balance under certain exceptions. And what are those exceptions? If the given balances constitute
cost of goods sold, if the balance constitutes adjusted purchases. Put this quickly, children. But I am damn sure लोगों के सिर के ऊपर से उड़ गया होगा, सर ये क्या है? इसी का डेरिवेशन हम पढ़ेंगे. ये चीज आपको दो बार काम आएगी चिल्ड्रन. प्रेजेंटली इन द चैप्टर ट्रायल बैलेंस एंड इन फ्यूचर जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तब भी ये काम आएगा आपको. सो टू रीजंस आर देयर व्हेन क्लोजिंग स्टॉक में अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस. व्हाट्स द फर्स्ट रीजन चिल्ड्रन? When cost of goods sold is given in the question. What's the second reason? Why sir it is so? ऐसा क्यों है? थोड़ी देर में पता लगने वाला है. I hope ये समझ में आ गया. Simple logic. Closing stock doesn't appear in trial balance. Under two conditions it may appear. The first one is question में COGS होगा. Second one is question में adjusted purchases होगा. So let's understand its derivation. चलन आपके सामने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है. डू यू फाइंड क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड इट? डू यू फाइंड क्लोजिंग स्टॉक रिटन इनसाइड इट? No. So closing stock has no appearance in trial balance because trial balance comprises of balances from ledger accounts and there is no ledger account with reference to closing stock. Therefore, sir कहां रहेगा बेचारा? It will appear outside. Sir, पता कैसे लगेगा? How much stock do we have? We'll visit the go down at the end of the week, end of the month, end of the day, end of the year, whensoever we may need it. Calculate करेंगे, पता लगेगा हमारे पास कितना स्टॉक है. उन 2-3 दिनों के लिए बिजनेस को बंद रखा जाता है. समझ में आ गई बात? सर बंद रखने से तो लॉस होगा. Valuation techniques are there. So people understood how will closing stock appear while preparing trial balance? Inside or outside, children? But there is an exception to the rule. सर अभी तो आपने 2 एक्सेप्शन लिखे थे, यहाँ पे तो एक ही आ रहा है. दूसरा एक्सेप्शन आपको अभी नहीं पढ़ाया जाता, वो फाइनल अकाउंट जब आप पढ़ोगे तब पढ़ाया जाएगा. Sometimes trial balance may provide the term या question may provide the term cost of goods sold. In that case, children, cost of goods sold sounds like an expense item or sounds like an income item? Cost of those goods which we are going to sell sounds like an expense item. So where it will be appearing? And closing stock under such circumstances will also appear on the debit. इतना सिर्फ अगर पढ़ लिया आपने तो 11th में 99 और 12th में 100 तो आ जाएगा. जिंदगी में सीए नहीं बन पाएंगे. इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. मैं ऐसा क्यों हूं? Why it appears inside. तो जो समझना चाहते हैं स्टे बैक, जो नहीं समझना चाहते हैं दे कैन डिस्कनेक्ट. खोपड़े में बात गई, ध्यान से सुनिएगा. क्लोजिंग स्टॉक क्यों यहां पे आएगा? सर वेरी सिंपल. यू एक चला गया बाहर. यू योरसेल्फ हैव टोल्ड सर कि असेट है तो इट हैज विच टाइप ऑफ बैलेंस. तो सर डेबिट में लिख दिया. एक्सपेंस है, इट हैज विच टाइप ऑफ बैलेंस, लिख दिया डेबिट में. अब और अंदर डायसेक्शन करने की क्या जरूरत है सर? मैं बायो का स्टूडेंट बहुत अच्छा था, बट 11th-12th में कॉमर्स मिला, बायो मिला नहीं, इसलिए डिसेक्शन इसी में कर लिया. कहावत है ना, जैसे कर्म करोगे जैसा फल चाहिए वैसे कर्म कर लो. समझ में आ गई बात? सो लेट्स सिट इन द व्हीकल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंड व्हाई क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस. सर वी नो, डोंट पंचर अवर खोपड़ी बिकॉज इट्स एन असेट. अरे ये तो चूरन कॉन्सेप्ट है, चूरन. Understand aqua regia, royal water, 3 parts of nitric acid and 1 part of superchloric. That's here. चलिए, why is it necessary कि COGS जब आपने लिखा तो आपको क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना है? ये सब जो लिखा है ये तो टाइम पास है. इसके लिए मैंने 3D एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है. पहले 2D में समझ ले, फिर 3D में समझते हैं. Messrs Suspense Enterprises bought goods worth came back children.
So let's get down with this concept clarifier, children. Let's get down with this concept clarifier. So Messrs Suspense Enterprises bought goods worth rupees how much? And out of that, we sold goods worth 4 rupees. So what is the amount of profit that we happen to make? Actually, some people have studied maths from China. That's why they always give Chinese answers. 80,000 के goods आपने खरीदे. Out of that, portion worth 65 is sold for what, children? How much profit did we earn? What is the amount of goods that we have not sold? 15,000. Is that well understood by all? Yes. Everybody, please put it in their copies, children. तो चिल्ड्रन ये जो 65,000 रुपये आपको नजर आ रहा है, this 65,000 rupee, children, is nothing else but cost of goods sold. So people got the meaning of cost of goods sold? Yes. Cost of those goods which we have sold. शायद बेसिक टर्म्स में ऐसा कुछ पढ़ा था हमने. अब यहाँ पे एक अकाउंटेंसी में फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का. फॉर्मूला गोज लाइक दिस: whatsoever goods we had at the start of the year plus whatsoever we bought plus whatsoever expenses we incurred at the time of buying minus the portion that we returned and minus that we were unable to sell. Take an example. We had goods at the start of the year worth rupees 10,000. 90,000 worth of goods are bought. 8,000 was spent on buying them. What is 10 plus 90 plus 8, children? 1,08,000. Is this much well understood by all? Children, this much well understood by all? Out of this, let us say we returned goods worth rupees 28,000. What is 1,08,000 minus 28,000, children? And out of that, 15,000 worth of goods remained unsold. So what value of goods have been sold, children? 65,000. Is this heard well? 65,000 rupees के goods आपने बेचे हैं. And if I say the selling price is 72,000, children, what is the amount of profit that we make? How much, children? 7,000. ये समझ में आ गया? So if we do not calculate COGS correctly, children, will profit calculation be correct? Significance and importance of COGS understood well? चलिए. So formula का काम अभी तो बहुत कम है. बच्चों आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस है, आपको नजर आ रहा है? Everybody, check out in the trial balance. Do we have items like opening stock? Do we have items like purchases? Do we have item like purchase return? Do we have items like wages? Do we have items like carriage inward, children? सर सब कुछ है हमारे पास, भगवान का दिया, होना भी चाहिए. What all items do we take into consideration while calculating COGS? Let's see. We take purchase into consideration, yes or no? We take opening stock in the formula of COGS, yes or no? We take purchase return in the formula of COGS, yes or no? Yes or no, children? Yes. And children, and outside the trial balance, we have something titled as what, children? Answer, children. Outside the trial balance, we do have what?
We consider this also while calculating COGS, subtract karte the. So I repeat the story. We take purchase, yes or no? We take opening stock, yes or no? We take purchase return, yes or no? And we take expenses on buying the goods. These two, purchase and carriage inward, are the expenses for buying of goods. So this trial balance available to us has all the items needed for computing COGS. Correct or wrong, children? Correct. What is the value of opening stock? Very good. What is the value of purchase? What is the value of wages? 3,000. Carriage inwards. Purchase return. Is this much understood well? Please get me the answer, children. 1,02,000, correct? 8 plus 90 is 98. 1,03,000 minus 1 is 1,02,000. समझ में आ गई बात? Minus, what do we have as closing stock? What is COGS, children? Quickly put this fast. Quickly put them, children, quickly. Be quick, be quick. Moving ahead, children. Children, considering all these items inside the trial balance, we added purchase, opening stock, direct expenses, and we subtracted closing stock. The net effect of only these items, children, happens to be 1,02,000. Will people agree with this fact? लोग इस बात से अग्री कर रहे हैं चिल्ड्रन? Children, answer. People agree with this fact? चलिए, what's the value here? 92,000. And children, closing stock is how much that we have subtracted? 10. क्या value? Sorry, 1,02,000 है. By mistake मैंने 92 बोल दिया. Due apologies, children. This comes to 1,02,000. सुनाई पड़ा सबको? And minus कर दिया आपने 10, तो 92 आ जाएगा. So what is the value of cost of goods sold? It's an expense item or it's an income item? It's an expense item. If I want to put it in trial balance, children, I'll put it in the debit balance column or credit balance column. Very good. How much? 92,000. Because ये 92,000 आ रहा है. इतना सबको समझ में आ गया? Now understand the nomenclature, strategy, approach, why we should write closing stock. बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. 90,000 plus 8,000 is 98,000. Plus 5,000 is how much, children? 1,03,000. Minus 1 is what? Items inside the trial balance related to the composition of COGS show how much? फिर से बोल रहा हूं. Items inside the trial balance show the composition in COGS amount to rupees how much? 1,02,000. तो ट्रायल बैलेंस का डेटा जो COGS के आइटम्स के नाम पे लिखा जा रहा है, इट इज हाउ मच, चिल्ड्रन? हमने कितना लिखा है? कैन आई से माय डेटा इन द ट्रायल बैलेंस which appears here, children, is 1,02,000? Is it here 1,02,000, children? So क्या मैं इन दोनों ट्रायल बैलेंस को एक दूसरे का रेप्लिका ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकता हूं? Why not? Because this trial balance has the data of how much? But this has a data of how much? Can I say they both have equal information? मैंने इसलिए सेल और परचेज को गायब कर दिया, नहीं तो दैट इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इनइक्वालिटी. हम खैर उसकी बात नहीं कर रहे हैं. तो जितनी चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रही हैं वो सीओजीएस के अंदर भी आ रही हैं. यस और नो?
जितनी चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रही हैं वो सीओजीएस के अंदर भी आ रही हैं, यस और नो? जितनी चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रही हैं वो सीओजीएस के अंदर भी आ रही हैं, यस और नो? आंसर है नो। एक आइटम और है जो सीओजीएस कैलकुलेशन में तो आता है चिल्ड्रन, बट इट इज नॉट कमिंग इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। लोग पहली बार तो नहीं समझ पाए, दूसरी बार लगा दाल में कुछ काला है, तीसरी बार लगा बुद्धि में कुछ काला है। ध्यान से सुनिएगा, ट्रायल बैलेंस constitutes the data whose net value is what, children? After deducting closing stock, COGS lands up to, and I have written that here. क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रायल बैलेंस का सारा डेटा COGS में आता है सिर्फ? नो, COGS में कुछ और भी आता है। आई रिपीट, COGS में कुछ और भी आता है। बट अगर मैं ये बोलूं all items given in COGS calculation are a part of trial balance, ये सही इंफॉर्मेशन होगी? But the items inside the trial balance are the only items which appear in COGS. One more appears, sir, one more appears. इतनी बात सबको समझ आ गई? If principle of equality has to be proved in recording the content, so this content of trial balance shows how much, children? Whereas COGS appearing here showing how much? What can I do कि मेरा 92,000 किसी तरह से ट्रायल बैलेंस के अंदर 1,02,000 बन जाए? I should add or I should subtract from 92? How much? And what is the meaning of this 10,000? This is, children, what is called as your closing stock. सुनाई पड़ी बात? So this is the reason why we put closing stock in trial balance. बड़े भैया हैं, कहने को तो बड़े हैं, बट बहुत ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है। मम्मी ने कहा जाओ कॉलेज छोड़ाओ, ट्रेन से टिकट करा दिया है, तो आप अपने बड़े भैया को कॉलेज छोड़ने जा रहे हैं। आप ही बचेंगे घर में, बड़े भैया तो चले गए, तो यू विल बी कॉल्ड एज, भैया तो गए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। गॉट इट क्लियर? क्यों भैया के साथ मम्मी भेज रही है? बड़े भैया थोड़े स्ट्रीट स्मार्ट, थोड़े भोले भाले टाइप के हैं, तो मम्मी ने कहा तुम थोड़े कॉमर्स वाले चतुरचंड टाइप के हो, वो पीसीएम लेके इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, जाओ जरा इंजीनियरिंग कॉलेज तक छोड़ आओ, फ्रॉम लखनऊ टू मुंबई, नहीं तो भैया रास्ते में किडनैप हो जाएंगे। तो भैया इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड यू आर क्लोजिंग स्टॉक। आप सुनाए ट्रेन में क्यों छोटा भाई बड़े भाई को छोड़ने जा रहा है? समझ में आ गई बात? तो क्लोजिंग स्टॉक इसलिए तो लिखा जाता है कि एसेट है, बट उसके पीछे का नॉमेनक्लेचर यही था चिल्ड्रन, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जब आपने बाहर लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, but when you calculated COGS, how did you calculate that? You took all items which are inside the trial balance and you took one more which was from outside the trial balance. तो ये जो अंदर धमा चौकड़ी मची हुई है ये कितनी है? बट ट्रायल बैलेंस में वैल्यू कितनी गई? क्यों कम हो गया? ड्यू टू, तो ट्रायल बैलेंस ये वाला और ये वाला अब इक्वालिटी, पैरिटी, इक्वल प्रिंसिपल शो कर रहे हैं। Here also we have 1,02,000, here also we have 1,02,000. अब ट्रायल बैलेंस ठीक हो गया। This is the reason why closing stock appears inside the trial balance. तो जैसे many a times बड़े भैया को छोटे भाई छोड़ने का इंजीनियरिंग कॉलेज, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ रहता है। ओके, बीइंग एन एसेट डेबिट बैलेंस लिख दो, COGS एक्सपेंस डेबिट बैलेंस लिख दो। अरे कोई इंटेलिजेंस नाम की भी तो चीज है, कोई जीनियस नाम की भी तो चीज है। डोंट बी अ वेरी गुड स्टूडेंट, बी अ जीनियस स्टूडेंट ऑलवेज। फंडामेंटल इज क्लियर और नॉट? तो ये लॉजिक है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों आता है। सबको बात समझ में आ गई? आई रिपीट, what is 90 plus 8 plus 3 plus 2 children? minus 1,000. तो ट्रायल बैलेंस के अंदर 1,02,000 का डेटा चाहिए, but in the name of COGS we have recorded how much? How 92 would become 102? Adding means putting on the very same side. In the name of what? तो क्यों जाता है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस में? 99.99% idiots on the planet earth will give the answer asset है, asset, because they are ass. समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का ये इस वजह से जाता है।
Quickly put it, children. लिख लीजिए, बना लीजिए.